is critical thinking is again a very important part. That developing analytical skills to evaluate AI recommendations and make informed clinical decisions. That what it exactly it is there it is doing. So there you are again requiring a very critical thinking becomes very important. And apart from all these innovation skills, that will give you edge over the various technology and various techniques, and even on AI if you are working on the innovations. Because it is always said, maybe you will the machine will learn all the information, all the actions, all related things which is discovered till date, but they are not very much aware regarding the requirement and discovery and thoughts what we are having, or consciousness what the humans are having. So we have, if you want to dominate, and literally you have, I always say you have to use the technology as your weapon, not to be dominated by that technology. So there again, that will play a very important role. The innovations, what the new innovations you are making, what the new thoughts you are creating there, and how you are that how the you are after generation of the idea, how these ideas are converted into the reality. That is also very important. This is related to the artificial intelligence, so I'm not going much into the. Please go to the next slide, because I have seen there are a lot of people who are going to share with you. So these are the various important area in which the AI applications are going on, specifically in the area of diagnostic, drug discovery, and patient personalization. So if I'll share, there is a benevolent AI, and it is it was involved in the discovery of a very novel drug for the rheumatoid arthritis during the COVID-19. And again, it was authorization, the emergency authorization was given for the use of this drug, and that drug was a drug for the arthritis by the name baricitinib. So this is example I'm telling you where we are requiring. So it was very fastly, it was processed, and like that in the case of molecular designing and generative AI. If it's generative AI, have given a lot of age on in the research. So in silico medicine, if I'll talk, there is a drug for the pulmonary fibrosis by the code INS 0118_055, using for the that why I'm giving you this example. This drug was end-to-end AI enabled, from the target discovery to the molecular design and moved into the human clinical trials. This all the product, all the related activity was processed through and that was with the AI. So this is the beauty of AI. If you'll see how it is making, if you the time which was traditionally it was required, we since so long we know that for a discovery of a drug we are requiring 15 to 20 years and billions of dollars. But now this is not a situation. The situation is changed. The time which is required for the drug discovery, it is almost 1/10, and also the fund which was required due to the available technology and available tools for this the research, and specifically with the help of AI tools. Again, if you'll see the key domains in the pharmacy, that is related to what I explained to you. That is basically data analysis, pharmacovigilance, robotic dispensing, clinical decisions. This is I have the specific. I am not. This is clinical decision is again very important, specifically in case of the diagnostics, where you are having a number of data, and the AIs are they are very much accurate, and they behave like a superhumans in that, and their predictions and their analysis is almost accurate by 99.99%. They never make any mistake in that. So again, this is an area which will be again dominated by the AI and related technologies. Please go to the next. Then education reforms, what it is needed. I already discussed with you what was the need, how we have changed. Now the syllabus is already in front of you. So and just please go through the slide fastly. So I'll come to that. This is the what we have already implemented. That's why I'm not discussing for the interdisciplinary collaboration, the digital labs, and requirement of that related to that. And specifically where you are requiring right now, if you'll see the challenge, what the challenge we are having, to which you are also narrating to it.
that we are requiring a trained people, and the teachers who are involved in the teaching of pharmacy, they should be aware and they should be made acquainted with all the technologies what we are going to implement. So faculty development and implementation, these are the basic challenges what we are having. And I'm very thankful to you people that you have organized such type of FDP, which is also narrating the same. So this is the that I already talked about the resource allocations. So right now, maybe from the point of view of world scenario, we are less. But if you'll see the total amount of fund which is allocated, it is also for a developing countries like us, it is also very high. So we are also involved in that, and a lot of emphasis is given in that area by the government too. So this is the challenges I already discussed about you for the fund allocation and the basically the skill which is required for it. These are the basic challenges. So if you'll see in the pharmacy education, this is again, we have to I'm repeatedly saying this is not an option. You have to go through it. आप मना नहीं कर सकते, आपके लिए ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको ऑप्ट करूं या ना करूं. शायद एक समय में कंप्यूटर आया था तो कुछ लोगों ने इसको ऑप्ट किया, कुछ लोगों ने इनको ऑप्ट नहीं किया, लेकिन आप जो आने वाला समय है वो बहुत टफ होने वाला है, एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट. और मैं बोल रहा हूँ कि ये इतना फ्रेंडली और इतना जो लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे डेफिनेटली दे विल लर्न. सो बहुत जब, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब हम सिलेबस में जब इसको इंटीग्रेट करने की बातचीत चल रही थी, तो जब हमने इनिशियली जैसे ही पहली बात किया, क्योंकि सिलेबस बनाने में समय जो लगा, 2 से 3 साल का समय जो लगा, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था कि बहुत हम डेमोक्रेटिक वे लिए, और इस पे जो पहला लोगों का विचार था कि हम क्यों कर रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग, व्हाई वी आर इन्वॉल्वड इन द फार्मेसी. एंड लेटर आई एम टेलिंग यू कि दोस पीपल हु आर रिएक्टेड ऑन दैट टाइम कि इसको क्यों कर रहे हैं, बाद में उन्होंने कहा नहीं ये तो जरूरत है, इसको करना पड़ेगा. सो आप समझ सकते हैं कि विचार कितनी जल्दी बदले हैं, और क्यों बदले हैं उसका रीजन ये है कि हमने देखा कि उसका इन्फ्लुएंस क्या है साइंस पे, रिसर्च पे, ड्रग डिस्कवरी पे, उसका जो रोल, बढ़ता हुआ रोल है वो हमने देखा, इसलिए हमने उसको तुरंत ऑप्ट करने की हमने कोशिश करी और हमने बात करी. Then this is again this is about the personalized learning and role of that in the AI in these platforms, that is adaptive platforms, virtual labs, case-based simulations. This is now, it is possible with your so many the tools which are being already approved, and I'm sharing with you that there are hundreds of tools which is already being approved by the FDA, and they are existing for proper and authentic use of that. So this is not like I'm sharing with that is I don't know you have heard about that AlphaFold or not, that it is called DeepMind, that is AlphaFold. This is that is AI based program which was discovered for the prediction of 3D structures of nearly all known proteins. So discovery, illusion of the structure of protein, it was a big task, but after AlphaFold it became very easy. नहीं तो जो हमारे प्रोटीन इतने कॉम्प्लेक्स उनके स्ट्रक्चर्स थे कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट, देयर इज अ कम्बरसम टास्क, बहुत सारा डेटा प्रोसेस करना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करना, दैट वाज वेरी टीडियस. बट आफ्टर दिस अगेन AlphaFold, this become very easy. Like there was a alpha genome, again there was a AI based that is program which was involved in the that is related to the genetic research, and that again it was very helpful, very helpful in that, if we discuss with the people who are dealing with the biotechnology like that. Again, what the competencies which is required by us, that is again I have mapped in this, that project based task, data interpretation, financial resource, ethical reasoning. So these are the assessing of competence up. If you want to see, these are the areas. I'm not going much into it. I'll be talking much on the applications where it is very much it is required. Please go to the next slide. Again, this is one area is very important area from the point of research and point of those people who are working in it, from the point of view of teachers also, that is drug repurposing. This is a very bright area in which we are where the AI is having a very important role in that. So AI screening during this during the pandemic, they flag existing antivirals and anti-inflammatories
बहुत सारे जो ड्रग थे इनको इन्हें फ्लैग किया, एंड सिंस टेस्टिंग ऑलरेडी अप्रूव ड्रग स्किप्स ईयर्स ऑफ सेफ्टी ट्रायल्स। तो जो एक डेटाबेस जो स्क्रीनिंग थी और उनका रिपोर्टिंग था, तो दैट सेव द टाइम। जो हम बहुत सारे जो अप्रूव ड्रग के जो सेफ्टी ट्रायल्स थे उनको हमने लेके इस पे काम किया। तो ड्रग रिपर्पसिंग में अगेन दिस इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस क्रिटिकल ethical considerations, or ye again along with the technology, this is always a point of discussions about the ethical considerations of the utility of the various technology based platforms and technology into the various areas, specifically in the healthcare sector. Here this is the what we are requiring. So this is the breaking down the adaptation barrier, resource limitation. मैंने बोला कि सबसे पहला हिच हमको क्यों है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स का लिमिटेशन है, people are less aware even from the everywhere. When I used to meet teachers from the pharmacy, they are always worried about कि who is going to teach AI, how we will teach, what is this AI. Just I'm telling you, you start doing it, डेफिनेटली यू विल डू इट। बहुत आसान काम है, बस सिर्फ आपको स्टार्ट करना है। मैं हमेशा एग्जांपल दे रहा था, मुझे एक टीचर ने पूछा कि सर कैसे सीखेंगे, ये तो एआई है। मैंने बोला आपके पास स्मार्टफोन है? तो उन्होंने कहा है। तो मैंने बोला स्मार्टफोन तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, आपको किसने सिखाया है स्मार्टफोन को चलाना? बोले सर किसी ने नहीं सिखाया, हमने तो स्टार्ट किया और सीख गया। मतलब बिल्कुल ऐसा ही एआई भी है कि वंस यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, definitely you will that will become very easy for you to capitalize over it. So I had already discussed about the digital device and faculty training. I have already discussed, so please go on the next slide. So why it is for the making industry ready skills where you are requiring, because industry, maybe I'm telling you it is always, it is on the slide, we are talking about the industry ready skills, but it is required in every area. Maybe you will go into the R&D, maybe you will go into the practice, maybe you will go into the hospital pharmacy. Everywhere you have to deal with this, because now they have started implementing everywhere. The technologies get implemented every day. I am getting that this is an app. Yesterday there is a young guy who have developed all the modules of the pharmacy AI, and it was on that app based he have developed, and he came to me to show that this is I have developed for the student of pharmacy to make them aware and give information related to the syllabus by the AI syllabus which has been integrated. So people are working very fast on it. So that is again required ki every area will be requiring. So maybe we are talking about industries, definitely the biggest consumer is industry, but in every field the skilled people will be required. For the students I am sharing ki sometime many that people ask me ki what is the importance of this, so that we are taking. So these are the few points which we can theoretical point where we convince that enhanced learning that made very easy. I'm telling you, before that, getting for a resource about that paper, now the things are become very easy. You are having so many apps where you will give to the paper with the keywords, so they will give you the abstract of that or extract of that, okay, this is the area, and this is the point you. So they are saving a lot of time for literature survey, for getting the latest information. It is very easy right now with the implementation of this AI, specifically in case of the student. If you are aware, then making notes, getting the very important topics, getting the case studies related to that, getting the multiple choice related to that become very easy. It is on tips that you can get from there. Like then again for the personalized pathway for adopts curriculum to, you have already discussed about that, and career readiness. Again, this is point I said ki if you want to make your career in any of the field, then it is required that you should be aware from that. Please go to next. So I always say the future starts now with the that adaptation with the AI enabled courses, and definitely it will be required, and you have to get capitalized over it. I was sharing that this is a clinical that is a clinical point of, from the clinical point of view. If I'm sharing with you, the clinical trials were very important, and that was time consuming and time taking. So specifically these AI
enabled programs have made this clinical trials also very competitive and very effective, and that is what I say, they are also saving the times too. There is one example of Novartis that they have used the AI machine learning partnership with Microsoft to optimize trial design and speed up the data analysis, and that is for the across discipline of the all the R&D which are in the pipeline. That is again one ADMT. This is a program which is for the toxicity prediction. So these are the I'm telling you what for we are discussing about the adaptation, but the implementation in different area and the utilization, the percentage is very high in that. So I say we are not having time. You have to run for it. So apart from discussion that कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, we have to be ready for that, what exactly it is required to be done. So this is all about, I have already discussed, that is how it is helping the drug discovery, hands-on training. That is, if you'll see every area, specifically target screening, molecule designing, repurposing, I have already discussed with you. And that is the various time and cost which is related to that. This is I've already discussed, so please move it slightly fast. This is already I've told you in the hands-on training how it is helpful. These are the various example of programs and that is which are available for that. Then clinical decision support system, as I have already discussed, that related to the electronic material, related to the data which is we are getting from the diagnostics, and that is also along with that prediction and recommendation of the AI which is there. So this is all possible with that, which is the prominent area in which we have to work. Please go to the next. So AI enhanced patient care. Again, in case of patient care, we are having agentic AIs made this area more interesting, where you are having AI chatbot which is available 24/7 for you, and there you are there literally, if you are not aware, they appear like a real. So I have seen one example, one trial of a company in which they have made a nurse and they were giving support to the pregnant ladies. So it was so interactive that you have to ask the question and they will give you the relevant answer, along with that what the support you are requiring at any point of time. So such type of things which will be on the tips, it will be available for 24/7 for you in that case. Like virtual assistant, it is again they have made virtual assistant for giving information, sharing the information when the absence of you. Then automated adherence, again it is a smart system monitoring system, and there again these things are applied. Virtual counseling, I have already said this is a probability of virtual counseling, along with the various AI chatbots and predictor programs. Then again, this is related to the global collaboration through the technology we are requiring. Again, research platforms, I've already discussed that it is required. Knowledge exchange and crossroad, that is now if you are having a technology like I'm sharing with you, if you'll see the total research which is going on in US, it is almost on the various programs and related products. But at the same time, if you'll see in the China, they are very much dominating over the physical form of the that part which is being utilized by that. For example, if you take an example of a robot, then a robot is made by the China and the whole brain is made by the US. So like that, the collaboration which is required. So again, it has opened the research collaborations and area for the to collaborate with the whole world. Please next. I'm not going into what is artificial intelligence and how it is important for the industry. I have already discussed with you. This is for the periods I have already discussed. This is in the AI in the pharmaceutical industry stat I have given you. You can go through it.
the presentation with you. You go through it and get, this is the, I have just given the data to understand the importance of the AI and the stat for that. That is for 2024 I have given. Now the more latest data are available through to which you can consider. This is the applications of AI in pharma. It does in drug discovery, preclinical predictions, clinical trials, manufacturing, in case of pharmacovigilance, drug repurposing, drug approvals, supply chains, and specifically one area which I've already discussed, that in the case of diagnostics and a related field, and in also in the pharmaceutical devices. Again, this is area where specifically the medicine, the equipments in which the medicines are combined with that. So again, they are playing very important role in that. The future pharma, AI plus quantum and biotech. This what I am saying. Ki the people who will work on the AI quantum along with the biotech, definitely they are going to be dominating the whole world. For example, if you see AI biotech, we know AI design, CRISPR technology. Those who are working in the biotechnology, gene editing, they understand what the leap they have got with the CRISPR technology. Like AI in quantum drug simulation, where you are requiring a quantum of accelerated virtual screening. There, actually, there with the virtual screening, you save a lot of time for that. Then biotech plus quantum, biomolecular modeling. That is assume I already, like AlphaFold, I have told you that is again helping you. All three unified problem, that is technologies. If we go, that will be for the various will be an effective way of representing you, and that is a problem. What we are saying, if you integrate, definitely you will land into a very successful technology with a bright career too. Then what is the industry demand and tech savvy of that? So you can understand, this is all I am telling you, what is the requirement, what they are expecting, and what they are expecting from us, and how much they are required in that. So employees seeking pharmaceutical companies around 85%, salary premium is almost 3x, and if you see innovation focus 92%, that is I have given. So that is very high data what I wish to share with you. Next. These are some success stories I have shared with you, with specifically in the academics area. That is, it is of St. James College and Belmont University, where they integrated the machine learning modules into the pharmacy curriculum, producing our graduates with advanced data analysis skill. And they, in case of, if we'll go through the case study, before and after, there was that is a remarkable change in the employability and packages with that student. Please next. That is again, I have already emphasized on the innovation, how the innovations are very much important to get to dominate the technology AI, and also have a very great career in that area. Sir got some call.
We are just connecting with the server. Just wait a second. So sorry for that. Again, technology and everything without electricity power, that is very difficult. So I lost there because of that. I lost my internet connectivity. And anyway, I was sharing with you that was related to the. Just I'm coming to the slide. Please wait for a second. So this is I was talking about that we discussed about what is the need, how it is required, how if it recently if you are predicting for it, if you are going for it. Specifically, I wish to discuss with you that the area, specifically in the area of, if you'll see the data I have shared with you for the industry, your efficiency, need, example of the various universities, what they have uh, created, and we are having a success story for that. Then again, we are, if we'll talk about AI integrated pharmacy graduates. So again, if you'll see, they will be very versatile, adaptive, future focused, and leadership ready. This is the qualities you are going to get out of it. Related to that, if you uh, take, if you'll see the important takeaway from key takeaways from this, that is strategic benefit. If you'll see, the AI integration enhances your learning outcomes, industry readiness, and innovation capacity in pharmaceutical education. Uh, Implementation roadmaps, stakeholders must address to the barriers through the funding, training, and strategic partnership for the successful adoption of the AI and AI platforms. And what is the action which is very much required? That is, this is the time, it is right time, it is time now to transform pharmacy education and prepare graduates for AI-driven healthcare future. So these are the few important key takeaway points. And at the last slide, I have kept one slide. If you'll go to the last slide, if you can share, this was the second last slide, and if you go to the last slide, so there I have kept a very a quote: "Ki when the winds of change blow, some find shelters and some make windmills." So choice is yours as academic leaders. So why I have kept this? देखिए, जब तेज हवा चलती है, हम दो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, अब तेज हवा चलती है तो आप एक आसान सा जगह, कोई अपना जगह कुछ के आप वहां पे छिप जाएं, या तो फिर उस तेज हवा में विंड मिल बनाए कि जिससे आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। तो चॉइस आपका हमेशा रहता है कि आपको छुप के रहना है या विंड मिल बनाना है। तो डेफिनेटली जो विंड मिल बनाएंगे वो आगे रहेंगे। एक बड़ा अच्छा सा बुक है कि व्हेन यू आर सिंकिंग बिकम अ सबमरीन। सो आई ऑलवेज से कि यू हैव टू ऑप्ट। अब जब आपको करना ही है तो आप पूरे तन मन धन से इसमें लगिए, और इस पे स्टूडेंट्स को भी आप अवेयर कीजिए कि स्टूडेंट्स की टेल देम द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी, एंड विदाउट द टेक्नोलॉजी सर्वाइवल इज नॉट देयर। सो and be make their minds be ready for it and do very well in this area. So what I was trying to convey, I just I was willing to convey with all of you that importance of that AI and related and the various areas which are dominated by the AI technology. So what I can little share with you, I have shared with you. Thank you for inviting me in this SDP to share my thoughts with you all. Uh,
I think so. If you are having questions, very fastly, I can take one or two questions because I have to go to another meeting. I have already twice rescheduled that meeting for more than 30 minutes. So please, if you are having some questions, please ask very fastly. For one or two questions, I'll take. So kindly take one question by Mukesh Kumar. Which AI tools or platforms would you recommend for pharmacy students to start learning today? Tools specifically, there are a lot of, that is your choice. If you say, it is always the applications are according to the need or the work what you want to perform. For example, if you are aware of the chat GPT, so there you, if you simplified of information and we process, it is very easy. But when you will discuss with the cloud, what you see, so they are more precise, more specific, and they perform their work very differently. Again, if you have to process with the scientific data, then again you are having different platform. So basically, you have to learn about the basics of the AI languages. What the language, you just know about the language. I'm not telling कि आपको पूरा उस पे capitalize करना है. Then the various applications, depending upon the what type of work you want to perform, you have to choose from. There is plenty of that is apps and programs are available in that. So that depends upon the what work you want to perform. That is on the basis of that you can choose. Now, I would like to invite Director Sir for the vote of thanks. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone present over here. On behalf of VPS Educational Institution of Pharmacy, it is my privilege to extend my heartfelt vote of thanks to our esteemed resource person, Professor Deependra Singh, for delivering such an informative session on establishing tech-enabled labs and implementing AI in clinical application. Sir, your expertise and clear explanations have made today's session highly informative and inspiring to all of us. I also express my sincere gratitude to our respected chairman, sir, MD, sir, organizing committee members, and for their constant effort, support, and encouragement. Thank you, everyone. Thank you very much, sir. Thank you very much for being with us. Thank you so much, Dr. Satin. Please permit me to leave this. Thank you, sir. Thank you very much. So nice of you, sir. This is token of love from our side. Thank you. Thank you very much. Nice interacting with you all. All the best for the coming sessions. Thank you, sir. Thank you very much.
A very good afternoon to one and all. Welcome in the second session. I would like to introduce our esteemed resource person for session 2 on biostatistics and data analysis tools. Dr. Sandeep Kumar Yadav is Professor and Head, Department of Pharmacology and Regulatory Affairs, SGT College of Pharmacy, SGT University, Gurugram, Haryana. He has an experience of more than 18 years in teaching, research, administration, and 5 years of experience in pharmaceutical industry. His expertise is on diabetes, preclinical pharmacology, clinical trials, neuropharmacology, hepatoprotective studies in animals. He has more than 40 research papers and review articles in Scopus Web of Science and in peer-reviewed journals. He has also published 1 textbook and 2 international book chapters in reputed journals. He has 2 UK patents and 6 Indian patents granted. He has 4 consultancy projects completed related to the development of herbal formulations and sea buckthorn-based preclinical research. He has guided 4 PhD scholars and 18 PG students. He has been international and national invited speaker, reviewer for international journals like Journal of Ethnopharmacology, Phytomedicine, Academic Excellence, and Industry Training Awards. He has many academic contributions like curriculum development. He is also a BOS member, PCI, QCI, and NAC coordination, IAEC activities, certificate course development. He is an experienced professor and academic leader with substantial contributions in pharmacology teaching, research, innovation, consultancy, patents, postgraduate research supervision, curriculum development, and institutional quality assurance. So please share your knowledge about the topic. Pragati ma'am, can you hear me? Yes, sir. First of all, good afternoon, everyone, and welcome to today's session on my topic AI, machine learning, and data analysis in futuristic pharmacy education. Particularly my topic on biostat and data analysis tool. At the outset, I would like to express my heartfelt gratitude to the management of BPS Education Institute of Pharmacy, ITA, for organizing this outstanding faculty development program and for giving me the privilege of sharing my knowledge with such a distinguished audience. I sincerely appreciate the vision and continuous effort of the management in promoting academic excellence and faculty development. I would also like to extend my special thanks to my dear friend, Professor Dr. Satyendra Singh, the organizing secretary, whose dedication and commitment have made this FDP a great success. Our friendship is more than 25 years,
has been built a mutual respect, trust, and shared position for academic excellence. And it's truly a pleasure to be here today for his invitation. Finally, I thank to all the participants for joining this session. I hope today's discussion will provide you with a practical insight into biostates and its application in pharmaceutical research, clinical studies, and evidence-based decision making. Let's make the interactive, engaging, and enriching learning experience together. So, I am starting to share my slides. Is my presentation visible? Only screen is visible, sir. Please open the file which you want to show. Your screen is visible, sir. I started the slide. Sir, first you have to open the slide in PPT. Excuse me, sir. Yes, I have started the slide. 1 second. Please. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. It is visible now. Okay. So today is the learning objective to understand biostates, choose clinical test, analyze data, interprets output, one second. Visible, sir? Visible. It is visible. Okay. So the learning objective of today's my topic is to understand biostate, choose statistical test, analyze data, interpret output, and create publications. Because the major problems associated with biostates and other things is that the student can do the experiment, they perform the experiment very well, but problem is associated that first they select the sample, because the major problem is associated with sample size selection. If you choose the wrong sample, देखो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई रिसर्च स्टडी स्टार्ट की है, चाहे वो प्री क्लिनिकल डेटा से रिलेटेड हो या फिर कोई भी क्लिनिकल ट्रायल हो, अगर आपने सैंपल साइज ही गलत चूज कर लिया तो आपकी पूरी स्टडी गलत हो जाएगी. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इन्हीं पैरामीटर्स को पढ़ेंगे कि ताकि आपका प्रॉपर सैंपल साइज सिलेक्शन हो, सही हम बायोस्टेट्स का मेथड या टेस्ट लगाए और उसके बाद में हमारी स्टडी सक्सेसफुली कंप्लीट हो और ताकि आप पब्लिकेशंस भी अच्छे से कर पाए. तो मैं आज आपको कुछ बायोस्टेट्स के टूल्स भी बताऊंगा, सैंपल साइज के भी कुछ टूल्स बताऊंगा ताकि आप अच्छे से अपनी स्टडी को, चाहे वो प्री क्लिनिकल सेगमेंट में हो या फिर क्लिनिकल सेगमेंट में हो, आप अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाए. तो मेजर प्रॉब्लम कि अगर आपने जो प्रोटोकॉल डिजाइन किया है या जो भी आप पीएचडी या एमफॉर्म या जो भी डिजर्टेशन का आप टॉपिक करना चाह रहे हैं, अगर आपने रॉन्ग टेस्ट सेलेक्ट कर लिया स्टेट्स में तो आपकी स्टडी सक्सेसफुल नहीं रहेगी. आपके रिजल्ट भले ही बहुत अच्छे आए हो, वो फेलियर हो जाएगा स्टडी का, है ना. आपने नॉर्मलिटी को इग्नोर कर दिया है, ग्राफ्स आपने पुअर बनाए हैं, सैंपल साइज बहुत छोटी ले ली है, मल्टीपल टेस्ट आप यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी आपका डेटा पब्लिकेशंस के लिए जाएगा, आपका रिसर्च पेपर या रिव्यू आर्टिकल जो भी आपका है वो वहां पे रिजेक्ट हो जाएगा. तो जस्ट मैं पहले स्टेट्स का कुछ नॉर्मल कंसेप्ट आपको डिस्प्ले कर रहा हूं ताकि उससे आगे हम फिर अलग अलग टेस्ट परफॉर्म कर सकें. स्लाइड प्रेजेंट है, आपको विजिबल है? It is visible. You can continue, sir. सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जैसा आपने पहले स्मॉलर क्लासेज में पढ़ा होगा, देयर आर सब 10 टर्म्स यूज्ड इन स्टेट्स लाइक मीन, मीडियन,
mode, standard deviation, SEM, that is standard error of mean, variance, confidence interval, and graphs. These are very important and crucial aspects for conducting states, for applying states. So for any data जो आपके पास आया है, चाहे कितने भी ग्रुप में आया हो, हमारे को दो तीन चीजें अच्छे से इंपोर्टेंटली चीज निकाल के लेके आनी है. एक तो मीन और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. अब इन दोनों में क्या फर्क है, अभी हम आपको बताएंगे कि एसडी और एसईएम में क्या फर्क है, कहाँ आपको एसडी की रिक्वायरमेंट होगी, कहाँ पे आपको एसईएम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की रिक्वायरमेंट होगी. वो अभी हम डेटा का जब एनालिसिस करेंगे उस टाइम आपको बताएंगे. तो मेन आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो इंपॉर्टेंट आपकी वैल्यूज हैं, एक तो आपका नल हाइपोथेसिस अडॉप्ट होना चाहिए. अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, पी वैल्यू आप क्या ले रहे हैं आपके टेस्ट के लिए. मोस्ट सिग्निफिकेंट के लिए आप 0.001 ले रहे हैं या 0.01 ले रहे हैं या 0.05 ले रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होएगा. आप जो भी टेस्ट अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें टाइप 1 टाइप 2 की एरर के चांसेस लेस हो, और जो पावर आपने स्टैटिस्टिकल टूल के लिए अडॉप्ट किया है वो आपका एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और रहेगा. तो सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा वो होगा सैंपल साइज कैलकुलेशन एंड वर्कफ्लो. देखो जो भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो, कैन आई टॉक टू इन हिंदी और इंग्लिश बोथ में? Hello. Yes, sir. Both. It is. बोथ. ओके. सो सैंपल साइज कैलकुलेशन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपका यही होगा. जो भी आप स्टडी डिजाइन कर रहे हैं, इफ यू choose wrongly the sample size, then your whole study will be failed. So how we can select the sample, how many groups you select, it may be decided by the primary outcome or primary objective of the study. That is very important and crucial aspect for your study. हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे if you are doing a preclinical study on animals and you are observing blood glucose level, it is a hypoglycemic study you are conducting on animals. You developing the diabetes in animals by streptozotocin, and your primary objective is to calculate the blood glucose level. That is the primary objective, कि how your test drug reduce the blood glucose level. But the secondary objective is also there, like after certain days of study you want to check HbA1c level, serum insulin level. These are the secondary objective. So for proper, क्योंकि आपको सैंपल पहले लेना पड़ेगा कि एक ग्रुप में नंबर ऑफ एनिमल्स आपको कितने लेने हैं, या कोई क्लिनिकल स्टडी हो रही है तो कितने वॉलंटियर आपको सेलेक्ट करने हैं. तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑन दैट बेसिस आपका सैंपल साइज का कैलकुलेशन होगा. इसमें कई फैक्टर्स आपके और इम्पैक्ट करेंगे, लाइक आपकी अल्फा कितनी है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, वो आपका इस पे अफेक्ट करेगा. कुछ सॉफ्टवेयर भी हमारे इसमें यूजफुल होंगे, जिसमें जी पावर आपके सॉफ्टवेयर होएगा, उनको अभी अब हम देखेंगे, डेमोस्ट्रेट करेंगे. तो पर्टिकुलरली अल्फा की वैल्यू जनरली हम फिक्स रखेंगे, दैट इज 0.05, एंड पावर जो लेंगे दैट इज 18 to 19%. और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी, एक स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा अल्फा, एंड जो वेरिएशन आ रहा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में वो कितना आ रहा है. तो ऑन दिस बेसिस फॉर एनी clinical study or animal study, the sample size is very crucial. So there are some 3 tools which are available online. The one tool is G-Power, other is OpenETI and EPI information. In these tools, you can calculate your sample size. So we are going to the other window. This is the, you can see the window is visible, or my presentation is visible? Only presentation is visible, sir. Okay, I am stopping the presentation.
Now the window is visible. Yes, sir. Yes, sir. Window is visible, sir. So this is online window, that is G power analysis window. So any student who is doing PG or MPharm or PhD, the first prime thing is the sample size calculation. So there are some, when you open this window, that is the particularly codigens.net stats. I can also share the screenshots to you or to Satyendra sir, so that you can use this analytical tool online. So in this, there is a one calculator is coming. In the calculator, first you want to solve some sample size selection you want to take. You want to take two independent means, because when you are doing any states, how many means you are taking and what are the tails are you taking. So that is the important parameter. Last I told that alpha value is 0.01. You can select this value. And for particularly the important parameter is ANOVA group. How many samples you are taking for ANOVA, that is analytical variance of analysis. So this can be taken, and standard deviation is that. For any tool, like I am sharing a other slide. Is it visible? Sir, website is visible. Okay, website is visible. Now it is visible. The Excel sheet is visible. Yes, sir. Excel is visible. Okay, in this Excel sheet, you see that there are certain groups are there. In these groups of animals, the blood glucose level is taken after certain interval, like at 0 over, 1 over, 3 over, 5 over, 8 over, and 24 over. We are taking in each group, there are 6 animals are there. The blood sugar are measured at different time interval. So what is the standard deviation? First, we have to take the average, and then we have to take the standard deviation. The standard deviation formula is also there. When you go to the Excel file, you go to the formula side, you see there is a some auto sum and some certain formula is also there. So in this, particularly you can choose the formula for more function side. For statistical analysis, there are some certain formula like average deviation, and for particularly there is a standard deviation is also there. You can directly select that formula. So I have chosen that formula from this side, so I can take the standard deviation. Now you have to check SEM. For SEM, that is standard error of mean. So whatever your standard deviation is coming in study, SEM is the data which can be obtained from SD. When you divide the SD by 2.44 factor, the SEM will come. That is standard error of mean is coming. So why I am telling you, when you perform any study, like for any biological activity in animals, the data is represented in tabular form as a mean plus minus SEM. So all data will be represented by these two parameters. While for any pharmaceutics or other related papers, when you are going on, then average means what is the mean plus minus SD. The standard deviation is taken. So first आपको ये दो चीजें अच्छे से नॉलेज में रखनी है कि आपका जो भी डेटा आएगा वो मीन प्लस माइनस एसईएम में आएगा या मीन प्लस माइनस एसईएम में आएगा. वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं. तो इस तरह से हम एसडी और एसईएम हम निकाल सकते हैं. तो इसमें जब आप ऑनलाइन फॉर्म में इसमें भरेंगे जी पावर वाले टूल में, ये पर्टिकुलरली जी पावर टूल का एनालिसिस का सैंपल है. जब आप इसमें डालेंगे डेटा का, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे, तो पर्टिकुलरली जो स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू है वो आप इसमें पुट करेंगे, तो पर्टिकुलरली ये आपके लिए एक सैंपल साइज का कैलकुलेशंस कर देगा. दूसरा एक सैंपल साइज का कैलकुलेशंस आप और भी कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे, वो हम चैट जीपीटी का यूज करके भी कर सकते हैं.
तो उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से हमें करना है। लाइक हमने क्या काम किया, मैंने आपको कहा था कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव निकालना पड़ेगा। आपको विजिबल है मेरी स्क्रीन चैट जीपीटी की? Sir, it is visible, sir. Okay. So I am performing a study in which my primary endpoint or primary objective is blood glucose level। जैसा अभी आपको बताया कि आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज ब्लड ग्लूकोज लेवल, एंड हम ये देखना चाह रहे हैं कि दो ग्रुप में वेरिएशंस कितना आ रहा है, हाउ मेनी वेरिएशंस आर कमिंग इनटू द टू ग्रुप्स। बिकॉज आपको पहले स्टडी डिजाइन करने से पहले आपको सैंपल साइज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होगा। तो जैसे आप मानते हो कि जैसे आपने 2 ग्रुप या 3 ग्रुप लिए, पहला ग्रुप जिसमें डिजीज आपने इंड्यूस की, जैसे अभी हमने कहा कि हम डायबिटीज इंड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोजोटोसिन, और उसके बाद हम दूसरे ग्रुप को हम क्या दे रहे हैं, ऐसे एनिमल्स जिनमें डायबिटीज हमने इंड्यूस की और उसको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं किस चीज का, वी आर गिविंग द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, लाइक वी आर गिविंग द ग्लाइबेनक्लेमाइड और मेटफॉर्मिन और इंसुलिन, whichever so you are standard you are selecting. And third group is those groups in which diabetes is induced, but you are giving the test preparation in 2 dosage or 3 dosage, whichever you are selecting. So our primary objective is blood glucose level monitoring. तो अगर मैं स्टैंडर्ड आपका दे रहा हूं और जिसमें कोई मैं व्हीकल ही दे रहा हूं, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहा हूं, उन दोनों में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल में कितना डिफरेंस आएगा। क्योंकि हम जानते हैं जैसे हमने उसको इंसुलिन दिया, तो नो डाउट व्हेन वी आर गिविंग द इंसुलिन और अदर मेटफॉर्मिन और स्टैंडर्ड थेरेपी, देयर इज ए रिडक्शन इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। For example, after induction of diabetes with streptozotocin, if the blood glucose level in the rats are reaching to the 300 milligram per deciliter, and after giving the standard therapy, it is reduced to 150. It means how much of amount is reduced? It is reduced to 150 milligram per deciliter. It means प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो एंड पॉइंट हमारा है वो है ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो कितना रिड्यूस हो रहा है, और वो कितना हुआ, जो एक्सपेक्टेड डिफरेंस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो और ग्रुप टू ग्रुप में कितना वेरिएशंस हो रहा है, जैसे एक ही ग्रुप के अंदर हम कितना वेरिएशंस ले रहे हैं, उसके लिए हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिग्मा, जो अभी हमने कैलकुलेट किया। तो सिग्मा की वैल्यू फॉर एग्जांपल 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है, अल्फा हम फिक्स रखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है सैंपल साइज कैलकुलेशन के लिए, n इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू जेड अल्फा बाई 2 प्लस जेड बीटा होल स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर। सो व्हेन वी आर पुटिंग द वैल्यूज इनटू दीज पैरामीटर्स, द वैल्यू ऑफ जेड अल्फा बाई 2, जेड बीटा एंड सिग्मा, दीज आर फिक्स, only the values are changing is sigma and delta. That sigma and delta value is variable, it depend on two things. One is primary endpoint, other one is expected difference, that is delta and standard deviation. ये जैसे ही आपका चेंज होएगा यहाँ पे आपकी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ऑन दिस बेसिस ये आपका फॉर्मूला कैलकुलेट करके आ रहा है। जब आप चैट जीपीटी में ये डालेंगे कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है, डेल्टा में इतना वेरिएशन आ सकता है, सिग्मा में इतना वेरिएशन आ सकता है ग्रुप वाइज, क्योंकि अभी आपने स्टडी परफॉर्म नहीं की है, हम सिर्फ एज्यूम्शन के बेसिस पे चल रहे हैं। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी सैंपल साइज कैलकुलेट कर देगा। तो ऑन दिस बेसिस द कैलकुलेटेड मिनिमम सैंपल साइज इज 6 एनिमल पर ग्रुप। और क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें मोटिलिटी भी होगी इसमें, तो ऑन द बेसिस ऑफ द दिस, अगर हम मोटिलिटी एक्सक्लूड करना चाहे 10 से 20% इसमें, तो 7 एनिमल्स पर ग्रुप हमारे लेंगे। तो अगर हमने स्टडी के शुरुआत में ही ये सैंपल साइज सही सेलेक्ट कर लिया तो हमारी स्टडी सक्सेसफुल होगी। अगर हमने सैंपल साइज शुरुआत में ही गलत चूज कर लिया, मान लो शुरुआत में ही हम 4 एनिमल पर ग्रुप ले लेते हैं, तो हमारी स्टडी आगे जाके फेल हो जाएगी और हमारा पब्लिकेशन भी नहीं हो पाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एस्पेक्ट्स कि सैंपल साइज हम सही से चूज करें, और ये सैंपल साइज का चूजन किस पे डिपेंड करेगा, हमारे प्राइमरी एंड पॉइंट पे डिपेंड करेगा। हैव यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now again I am going to the presentation. Is it my presentation is visible? So presentation is visible. Okay. So these are the formula, the primary outcome के basis पे जो हम select कर रहे थे, already मैं आपको बता चुका हूँ कि how we can select the
सैंपल साइज ऑन दिस बेसिस। एक एग्जांपल अभी मैंने लिया है कि मीन डिफरेंस हमारा डेल्टा की वैल्यू 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है। अल्फा और पावर आपकी फिक्स हमने रखी है, पावर इज 80%, दैट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये क्लिनिकल स्टडी लिया है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लिनिकल स्टडी हाउ द सैंपल साइज इज कैलकुलेटेड। सो ऑन दिस बेसिस द वैल्यू ऑफ एन इज 25 पार्टिसिपेंट पर ग्रुप। मतलब अगर हम इस क्लिनिकल स्टडी में 2 ग्रुप इंक्लूड कर रहे हैं तो हमारे को मिनिमम 58 पार्टिसिपेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिए हैं। एक दूसरा आपका एक और एग्जांपल प्राइमरी प्लान आपका लिया है कि हम एनोवा फॉलोड बाय इंडिपेंडेंट टी टेस्ट आपका लगाना चाह रहे हैं। पर्टिकुलरली हमारा प्राइमरी आउटकम क्या था, ब्लड ग्लूकोज लेवल में वेरिएंस। सेकेंडरी आउटकम अभी आपको जैसे बताया सीरम इंसुलिन और HbA1c के लेवल में हम चेक करना चाह रहे हैं। हमारा मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशंस में रिजल्ट्स आएंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने 95% रखा है और पी वैल्यू हमने 0.05 रखी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम जी पावर सॉफ्टवेयर उसके ऊपर जा सकते हैं या चैट जीपीटी से भी डायरेक्टली हम कैलकुलेट करवा सकते हैं हमारे सैंपल साइज की। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके बेसिस पे आप सैंपल साइज का एनालिसिस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आपका दिया है कि फॉर एग्जांपल एक क्लिनिकल स्टडी या ट्रायल हम करना चाह रहे हैं। इट इज ए phase 1 क्लिनिकल ट्रायल या phase 2 क्लिनिकल ट्रायल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू ड्रग दैट रिड्यूसिंग LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल। If in 2 groups the standard drug reduce the cholesterol level, in between the 2 group there is a variation is 15 milligram per deciliter. The value of delta is 20 milligram, sigma is 20 milligram per deciliter, alpha and power we are maintaining same. So when you put this all these things into the formula, the total number of participant coming for the per group is 28 participant per group. है ना? So on the basis of this we can select 28 into 2, it means it's double. So on this basis the sample size is calculated. I think this thing is understood by all of you. Yes, sir. So now we are coming on the states part. Which analytical tool or states tool or which test you are adopting? When you complete your study, the analysis can be done by statistical analytical method. And after that you are going for publications of research paper or you are publishing your dissertation thesis or PhD work. So there are various tests are available like t-test, ANOVA, chi-square test, correlation, regression or cervical analysis. So where we are using these tests? If you want to compare 2 groups, in between 2 groups, then student t-test will be applied. तो जब भी आप अपना प्रोटोकॉल या फॉर्म भी सबमिट करेंगे तो आपको स्टेट्स का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे एट द टाइम व्हेन रिजल्ट्स आर कमिंग। तो इफ यू वांट टू कंपेयर 2 ग्रुप्स, मान लो आपने मेडिसिन 2 ही ग्रुप में दी है, ग्रुप ए ग्रुप बी, and you want to compare these 2 groups, then the statistical test will be studentized t-test will be applied. If you want to compare more than 2 groups, A, B, C, D, yeah, A, B, C, D, E, then ANOVA is applied, that is analysis of variance. And after ANOVA, the post-test will also apply. The post-test will be of different type like Dennett test or chi-square test or Mann-Whitney test. The test will be applied after post-analysis. And if you want to do study, like for example, if you are doing a paradigm method in clinical trial, preclinical study. So before developing a edema, what is the volume of PA of the animal? That is pre-reading is available with you. And after induction of disease and treatment, the after study, the results are also available with you. So for that, you have to apply paired t-test. So there are some list of tests which are available in this slide ki where you have to adopt which type of test. So there are statistical tests are applicable. So when you are going for ANOVA, again in ANOVA there are 2 type of ANOVA. One is one-way non-parametric ANOVA and other way is 2-way ANOVA, that is non-parametric ANOVA. So what is the major difference?
देखिए मेजर डिफरेंस अगर आप देखो वन वे और टू वे में, जो वन वे एनोवा मेथड है उसमें वो नॉन पैरामेट्रिक है, जबकि टू वे आपका पैरामेट्रिक। अभी हम देखेंगे, स्टेट में भी देखेंगे, आप जब सेलेक्ट करेंगे, जैसे आज हम आपको पर्टिकुलर कुछ 2-3 सॉफ्टवेयर बताएंगे, उसमें आपको पहले चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा एनोवा लगा रहे हैं, आप वन वे लगा रहे हैं या टू वे लगा रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका वन वे एनोवा में एक ही होगा, जैसे अभी हमने कहा ना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा एक ही था, दैट इज ब्लड ग्लूकोज रिडक्शन या कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन या ट्राइग्लिसराइड रिडक्शन। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है आपका, अगर आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक से ज्यादा है, 2 है, देन यू हैव टू अडॉप्ट टू वे ऑफ एनोवा, है ना। तो उस केस में आपको टू वे ऑफ एनोवा लगाना पड़ेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, कंटिन्यूअस अगर है तो उस केस में हमारे को वन वे एनोवा अडॉप्ट करना पड़ेगा, और अगर आपका कंटिन्यूअस और ऑर्डिनल नहीं है तो टू वे एनोवा हमारे को लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, अगर आपके ग्रुप्स 2 से ज्यादा हैं, तो सॉरी 3 से ज्यादा है, तो हम वन वे ऑफ एनोवा लगाएंगे। और मल्टीपल ग्रुप्स हैं जो 2 फैक्टर्स से डिसाइडेड हो रहे हैं, तो उस केस में हम टू वे ऑफ एनोवा लगाएंगे। जनरली आप देखो तो जितने भी हमारे जो एनिमल से रिलेटेड स्टडीज होंगी, वहां पे आपको वन वे ऑफ एनोवा जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको पोस्ट एनालिसिस के लिए एक टेस्ट आपको और लगाना पड़ेगा। इस तरह से सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, क्योंकि हमारा प्राइमरी आउटकम जो होता है ज्यादातर स्टडीज में एक ही होता है, 2 प्राइमरी आउटकम हमारे नहीं होते हैं मैक्सिमम केसेज में। तो उस केस में हम वन वे नॉन पैरामेट्रिक एनोवा लगाएंगे, जिसका नाम दूसरा क्रूसल वैल्यूज टेस्ट है। तो ये आपका हो गया वन वे एनोवा, है ना। जनरली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होएगा इसमें, 3 या मोर इंडिपेंडेंटली ग्रुप को अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप आपका कंट्रोल है और 3 अलग ग्रुप हैं जिसमें ड्रग एबीसी आपने दिए हैं, उनको आप कोलेस्ट्रॉल के डेटा को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस आपको वन वे नॉन पैरामेट्रिक एनोवा लगाना पड़ेगा और पोस्ट एनालिसिस आपको और परफॉर्म करना पड़ेगा। और टू वे एनोवा के लिए पर्टिकुलरली 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम किस तरह से समझ सकते हैं, देखिए सेम एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपके डिफरेंट ट्रीटमेंट में अगर मेल और फीमेल वाइज आपका चेंजेस आ रहा है ना, तो इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑन सेक्स आप ये भी देखना चाह रहे हैं कि हाउ मच ऑफ रिडक्शंस बाय ड्रग ए और ड्रग बी ऑन ब्लड ग्लूकोज लेवल विथ इफेक्ट ऑन द सेक्स, आइदर मेल में कितना इंपैक्ट आ रहा है, फीमेल में कितना आ रहा है। तो यहाँ आपके 2 पैरामीटर हो गए। तो उस केस में हमारा टू वे ऑफ एनोवा जो कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर लगेगा, तो वहां आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटिस्टिकल टेस्ट को आप डिफरेंटली कर सकते हैं। तो अब हम सीधा आ रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो वेरियस सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल लाइक एक्सेल, एसपीएसएस और जो आपका ये जो सॉफ्टवेयर हैं जनरली जैमोवी वगैरह, ये क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आपके यूज होते हैं। तो अगर कोई क्लिनिकल स्टडी में या इंडस्ट्री में है तो उनको ये टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे। जनरली हमारी जो प्री क्लिनिकल रिसर्च है, इन दैट रिसर्च वी आर परफॉर्मिंग ऑल टेस्ट ऑन ग्राफ पैड प्रिज्म। सो दिस इज ए सॉफ्टवेयर, है ना, उस पर आप करेंगे परफॉर्म। मैं आप सीधा ही सॉफ्टवेयर पे आपको लेके जा रहा हूँ। आपको विजिबल है मेरी स्लाइड, सॉफ्टवेयर ओपन है, Software is visible, sir. So software is visible. ओके। सो जो भी आपके रिजल्ट आए, है ना, अब मैं उन रिजल्ट्स को ले रहा हूँ। तो जैसे ही आपने जैसे अलग अलग ग्रुप्स में ये बनाए, ये अलग अलग टाइम इंटरवल पे ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ये हमने एक्सेल में इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स में लिए, हमने पहले उनको कॉपी कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू द सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम न्यू टेबल पे जाएंगे। ठीक है, आपको न्यू टेबल पे जाकर के वर्क इंडिपेंडेंटली पे क्लिक करना है। इसमें I having this software, I will send this software to Satyendra sir. If you want to perform your statistical analysis, that is very good software. You can perform statistical analysis without any help. So work independently पे आपको जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपके अलग अलग आएंगे कि हाउ मेनी सिंगल वॉल्यूम या किस तरह के वो आएंगे। अगर आप अलग अलग एक एक कॉलम में एक एक लेना चाह रहे हैं तो ये सिंगल वॉल्यूम कॉलम पे हमने इसको एप्लीकेबल कर दिए। अगर आप 3 से कंपेयर करना चाह रहे हो तो यहाँ पे इसको हटा करके यहाँ पे आप ले आएंगे।
है ना। तो कितने रेप्लिकेट होंगे, जितने भी ग्रुप से आप कंपेयर करना चाहें, 2 3 4 5, वो आपका आ जाएगा, क्योंकि हम केवल सिंगल वैल्यू ले रहे हैं ग्रुप में, तो इसलिए हमने इसको उसी पे टिक किया। अब हमारा डेटा किस फॉर्म में, हम जानते हैं हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में लिया है, विथ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन में लिया है। जैसे हमने इसको ओके किया, ये हमारी नई एक एक्सेल खुल गई है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। अब आपका जो ए वाला पार्ट है, वहां से आपने जो भी कॉपी लिया था वहां से आप पेस्ट कर दीजिए। ऊपर हमारे ग्रुप्स आ गए और नीचे हमारी ये रीडिंग्स आ जाएगी। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये जैसे हमने अलग अलग टाइम इंटरवल पे ये ग्रुप वाइज लिया, हमने इसको कॉपी किया और इसको हमने पेस्ट कर दिया। ओके, ये सिर्फ हमने डेटा का सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर पुट किया है। अब हमारे को इसका एनालिसिस करना है। नाउ वी आर गोइंग टू द एनालाइज। यहाँ पे एक बटन है, आप ऊपर देख रहे हैं जहां मेरा कर्सर है, एनालाइज पे जाएंगे। और क्योंकि हम ग्रुप टू ग्रुप में कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो अभी आपको बताया कौन सा लगाना पड़ेगा, वन वे एनोवा नॉन पैरामेट्रिक। सो वी हैव टू सेलेक्ट द टेस्ट वन वे एनोवा नॉन पैरामेट्रिक। आई हैव सेलेक्टेड दिस टेस्ट। अब कितने डेटा सेट के लिए आपको ये टेस्ट लगाना है, तो पहले आपको डेटा सेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वी विल सेलेक्ट दिस डेटा सेट। अभी आप देखो आपकी टेबल कहां से कहां तक थी। डेटा सेट हमारा यहाँ पे आपका ए से लेकर के ई तक आ रहा है। तो आप कितने देख रहे हो, टोटल 6 ग्रुप है। तो यहाँ पे हमने डेटा सेट टेबल में 6 ग्रुप में ले लिया, सेलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहो किसी को डी सेलेक्ट करना तो डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो 6 डेटा सेट हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद इसको ओके बटन पे हमने क्लिक कर दिया। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर ओके। जैसे ही हमने एनोवा वन वे नॉन पैरामेट्रिक लगाया, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि पोस्ट टेस्ट आपको और परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपका टेस्ट नेम में पोस्ट टेस्ट में आपका आ रहा है। अब जैसे पोस्ट टेस्ट में हम कंपेयर, क्योंकि ये रिजल्ट आपके किसके हैं बेटा, ये रिजल्ट हमारे हैं, हम कंपेयर करना चाह रहे हैं 2 ग्रुप को। और तो एक ग्रुप आपका ऐसा है जिसमें आपने डिजीज इंड्यूस की और कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, उससे हम इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पोस्ट टेस्ट में जब आप केवल कंट्रोल से कंपेयर करेंगे तो हमारा टेस्ट कौन सा लगेगा, डनेट लगेगा। तो व्हेन यू आर कंपेयरिंग ऑल कॉलम विथ कंट्रोल, तो पोस्ट टेस्ट में हमारा डनेट लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने डायबिटीज इंड्यूस की थी स्टेप्टाजोटोसिन के साथ में, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, हम उस ग्रुप को कंपेयर करना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड के साथ में, हम उसको ही कंपेयर करना चाह रहे हैं टेस्ट के अलग अलग फॉर्मुलेशंस के साथ में, तो हमारा कौन सा टेस्ट लगेगा। और अगर हम सारे कॉलम आपस में कंपेयर करना चाह रहे हैं तो हमारा टकी टेस्ट लगेगा, है ना। इसके अलावा हमारा न्यूमल कॉल टेस्ट भी आपका हो सकता है, जिसमें ऑल कॉलम कंपैरिजन हो सकता है। तो पोस्ट टेस्ट आप खुद सेलेक्ट करेंगे। तो ये जैसे हमने डनेट टेस्ट सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि डनेट में आप केवल एक ग्रुप का कंपैरिजन बाकी सबसे कर रहे हो। तो अब ये आपसे पूछेगा कि बाकी ग्रुप कौन सा जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल आपका बी वाला जो कॉलम है ना, बी वाला जो कॉलम है वो आपका कंट्रोल वाला था, जिसको आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया और डिजीज इंड्यूस की। तो यहां जाकर के हमने क्या काम किया, कॉलम बी सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आपने कॉलम बी सेलेक्ट कर लिया, अब आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल सेलेक्ट करना है। जैसे अभी हम कह रहे थे ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल हम 80 से 100 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। तो जितना ज्यादा स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट आप टेस्ट में अप्लाई करोगे, आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल रख रहे हो, इट मींस जो लास्ट में आपका वी शेप्ड आपका आएगा, 5% एरर यहाँ पे आपकी विजिबल होगी। अगर हम और ज्यादा, आपको लग रहा है आपके रिजल्ट और ज्यादा अच्छे हैं, तो आप इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को 99% पे लेके जाइए। तो उसके बेसिस पे आप उसको कंपेयर कर सकते हो। तो अब हमने इसको कितने पे रखा है, 95। ज्यादातर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे वो 95% इंटरवल पे ही करोगे। इसीलिए आप देखते हो ज्यादातर एक्सपेरिमेंट में पी वैल्यू 0.05 आपकी आती है। अगर आप चाह रहे हो पी वैल्यू 0.01 आनी चाहिए, तो 99 वाले कॉन्फिडेंस इंटरवल पे आपका जाना चाहिए। तो अब हमने ये सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने ये ओके कर दिया। जैसे ही आपने ओके किया, ये आपका स्टेट लग करके पूरा टेबल बन के आ गया है सॉफ्टवेयर में। देखिए पी स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.0001 आ रहा है। उसके बाद आप इस पे आगे जाएंगे टेबल पे, 1 सेकेंड। यहाँ पे आगे जाएंगे तो आपका मीन स्क्वायर लिखा आ रहा है यहाँ पे।
मीन स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है, ये सब आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप जब अपना रिजल्ट लिखोगे किसी भी पेपर में, तो पर ग्रुप वाइज आपको क्या लिखना है, जो एक्सेल अभी हमने चूज की थी, हमने कहा था क्या निकालेंगे, मीन प्लस माइनस एसईएम। तो मीन प्लस माइनस एसईएम आपको हर ग्रुप में लिखना है, और उसके बाद जो स्टार आप लगाते हो ऊपर, वो पी वैल्यू के बेसिस पे लगाते हो। तो देखो अब हमारा पहले वाले ग्रुप पे पी वैल्यू कितनी आई है, पी वैल्यू लेस देन 0.001, जबकि दूसरे वाले ग्रुप में क्या आ रहा है, पी वैल्यू मोर देन 0.05, इट मींस इट इज नॉन सिग्निफिकेंट। तो ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड एंड ग्रुप फोर इज नॉन सिग्निफिकेंट, बिकॉज इसमें वैल्यू पी इज मोर देन आ रही है, जबकि पहले वाले में हमारी पी वैल्यू क्या आ रही थी, 0.001। तो इस तरह से हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उसमें टेबल में बना सकते हैं। अब हमारे को ग्राफ बनाना है, उसमें भी मेहनत नहीं करनी है आपको, सीधा आप क्या काम करेंगे, यू कैन गो टू द ग्राफ साइड, है ना, इसके लिए जाइए, सीधा आपका ये ग्राफ वाले पे लेके चला जाएगा। ओके, अब आप किस तरह का ग्राफ चाह रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल ये आपके 5-6 ग्रुप थे, 1 2 3 4 5 6, यू डायरेक्टली सेलेक्ट दिस कि आप कैसा ग्राफ चाह रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादातर पेपर्स में देखते हैं बॉक्स बार चार्ट होते हैं, आप इसमें बार चार्ट में जाइए, और ईरर बार भी आपके लगे होते हैं यार उसमें। ईरर बार आपका किसके लिए होता है, एसईएम के लिए, स्टैंडर्ड ईरर ऑफ मीन के लिए। तो आप इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड ईरर ऑफ मीन में ईरर बार आपका दोनों साइड में जाना चाहिए, अबव एंड बिलो बोथ, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा पहले वाले ग्रुप के लिए रीडिंग आ गई। ऐसे ही आप हर उसको सेलेक्ट कर करके, है ना, जैसा भी आप ग्राफ चाह रहे हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ईरर बार आपको अबव एंड बिलो दोनों पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप चाहें इसका कलर चेंज करना तो कलर भी चेंज हो जाएगा। मान लो आप इसका इस तरह से चाह रहे हैं और उसके बाद में इसका किस तरह का कलर होना चाहिए, ऐसा कलर होना चाहिए, वो कलर वाले ऑप्शंस में जाकर के चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके अलग अलग ग्राफ्स आपके रेडी होंगे। बाद में आप इसको पेस्ट कर सकते हैं आपकी वर्ड फाइल में, जो भी आपका मेनू स्क्रिप्ट आपको भेजना है, थीसिस में आपको इंटरप्रेट करने। ऊपर आप चाहे हेडिंग जो लिखना है वो भी लिख सकते हैं। डेटा टेबल नंबर 3 में यहाँ पे जाके सेलेक्ट करके, फॉर एग्जाम्पल हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी, जो भी आपको लिखना है। और इधर हम क्या ले रहे थे, ब्लड ग्लूकोज लेवल एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। और ये किस में ले रहे हैं, जनरली यूनिट आपकी इधर लिखी जाती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इस तरह से हमारा ग्राफ ओके हो जाए। ये हो गया हमारा एक टेस्ट कि हाउ वी परफॉर्म द सिंगल टेस्ट। इसी तरह से आपका दूसरा, जैसे इसमें टेस्ट लगाना है आपको, ये हमारा डेटा था, अभी हमने क्या लगाया, एनोवा विथ डनेट। डनेट आपका नेगेटिव कंट्रोल से कंपेयर कर रहा है बाकी सारे ग्रुप्स को। तो यहाँ अगर हम चेंज करना चाहें एनालिसिस में, तो देखो यहाँ पे एनालिसिस में गए, हमने वन वे ऑफ एनोवा नॉन पैरामेट्रिक लगाया, सेलेक्ट डेटा सेट हमने कर लिया ओके 6 के लिए। और उसके बाद हम पोस्ट टेस्ट में कौन सा लगा रहे, वी आर फॉर एग्जांपल यूजिंग टकीज टेस्ट। इन टकीज टेस्ट वी आर कंपेयरिंग ऑल कॉलम्स फ्रॉम कॉलम 1 टू कॉलम 6, ऑल इट इज कंपेयरिंग। तो इस तरह से जब आप इसमें लगाएंगे तो इसका रिजल्ट देखिए डिफरेंट आ गया। तो एक तरह से आप टेस्ट कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, ये आपको स्टेट में पहले देना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे आपकी रीडिंग्स आएगी। तो अब आप देखो, उसमें तो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक ग्रुप का कंपैरिजन डनेट में बाकी सबसे कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे हमारा सारे ग्रुप का कंपैरिजन सारे ग्रुप से। यहाँ देखिए ग्रुप 1 का हमने कंपैरिजन किया, है ना, क्योंकि ऊपर आप जो ग्रुप्स ले रहे थे वो किस तरह से ले रहे थे, 5 ओवर 8 ओवर 24 ओवर, वो जो भी आप रेटिंग देंगे उसके बेसिस पे आपका ही आएगा। तो इस तरह से हमारा इस सॉफ्टवेयर का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। अगेन आई एम कमिंग ऑन द प्रेजेंटेशन। आई थिंक ये सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया होगा। सो दीज सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, तो प्रॉपरली हम इनको अडॉप्ट करें और इनको लगाएं। तो एक्सेल, एसपीएसएस, ग्राफपैड, प्रिज्म, दीज सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल एंड ऑन इंटर। हाँ हेलो, यस, ओके। तो इस तरह से हमारा स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई हो सकता है।
तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है, जी पावर टूल, और ये आपका पर्टिकुलरली आप नोट कर सकते हैं। सर को मैं प्रेजेंटेशन भेज चुका हूं, वो आप चाहे तो ले सकते हैं, तो इन सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? Sir, your voice is not coming. Can message in chat box. Audience, if you have any queries or questions, you can message in the chat box. One question is coming from Nidhi Thakur. Software from which teacher? Statistical analysis. So for statistical analysis, for teacher, particularly for which segment you are coming, the GraphPad Prism software will analyze all the things. So it is a very good software. Otherwise, you can use simple Excel also. In Excel, you can also perform analysis. Thank you, sir, for your kind information. Now I invite Director, sir, to give vote of thanks. Good afternoon, everybody present over here. Gives me immense pleasure to extend my heartfelt thanks to our esteemed resource person, Dr. Sandeep Kumar Yadav, for delivering such an informative session on biostatics and data analysis tools used in pharmaceutical research. So it is a very informative session. Your expertise and clear explanation have made today's session highly informative and inspiring to all the participants. I also express my sincere gratitude to our respected chairman, sir, MD, sir, and organizing committee members for their constant effort and encouragement. Thank you, everyone, for joining with us. Thank you, our esteemed resource person, Dr. Sandeep Kumar Yadav. Thank you very much for delivering such an informative session. Thank you. Thank you, sir. Thank you. For the audience, today there is an announcement that you had to submit your feedback form regarding these two sessions. So it will be ended by tonight, 12 o'clock. So you should fill it within 15 minutes it is coming. You should fill it before going to sleep. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Madam, feedback form is ready? Yes. Feedback form is available in chat box also. We are sharing the feedback in our official WhatsApp group. Thank you everyone for joining. You send it to ma'am. We are forwarding in official WhatsApp group. Thank you everyone for joining.